Well students, in the previous video we learned how to multiply the numbers, two-digit number which is nearer to 100. Suppose I take one example again, 94 into 98. 100 minus 94 is 6 and 100 minus 98 is 2. 6 2s are 12. 98 minus 6, 2. 98 minus 6, I'm sorry, it's 92. Write 92 and that's the answer. Now we are going to take the numbers which are nearer 100 but it is a 3-digit number. In the previous video we have taken 2-digit number. Suppose number is 107 into 108. Now 107 is how much more than 100? यानी 107 से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा 7. 108 से 100 माइनस करेंगे 8. What is 8 into 7? 56. हम जिसमें 2-digit नंबर था वो 100 से लेस था तो माइनस कर देते. ये 100 से ज्यादा, इसमें इस पेयर को ऐड करेंगे. चाहे इसको ऐड कर ले चाहे इसको ऐड कर ले, आंसर सेम आएगा. That will be 115. So this is the answer. Let me take another example. 104 into 106 let's say. तो यहाँ 4 यहाँ 6. I think you can understand मैंने 4 और 6 क्यों लिखा. 100 माइनस करेंगे दोनों से. 104 से 100 माइनस किया 4 आ गया. 106 से 100 माइनस किया 6 आ गया. या इस ढंग से समझे. 104 कितना ज्यादा 100 से 4. 106 कितना ज्यादा 100 से 6. तो ये 24 बन गया. अब इसको और इसको ऐड करेंगे या इस पेयर को ऐड करेंगे, क्रॉस वाला में ऐड करेंगे और दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा. तो इट इज 110. दैट इज द आंसर. एक एक्सेप्शनल केस भी सुन लें. सपोज इट इज 101 into 107. Now what will happen? Here we will get 1 and here I will get 7. 7 into 1 7. Previous video में भी मैंने बताया था अगर ऐसा केस आ जाए हम इसको 2-digit नंबर बनाते हैं. I will put 0 here. 7 लिख लें या 07 लिख लें, number will remain same. That is the exception here. अगर सिंगल में आ रहा है तो उसको 2-digit नंबर बनाने के लिए हम उसके पहले 0 लिखेंगे. Now 107 plus 1 108. That will be the answer. So now I want you to try some numbers. Suppose it is 105 into 108, 107 into 102, 109 into 103. You can keep on trying and you will see that it is the shortest way to multiply such numbers. Again, the trick applies when the numbers are nearer 100. जो near है 100 के पास नंबर है उसी में ट्रिक अप्लाई होगी, बाकी नंबर्स में नहीं होगी. Rather, in the next video, I will take up some more numbers, more special numbers, how to multiply them and get the results quickly. Thank you very much.